Hello students, welcome to the online classes of Resonance. I am Faculty of English. My name is Saloni Sadda. Today I am going to teach you a new topic, adjective. It is not a new topic for you actually. You have already studied this topic in your previous classes. What is adjective? In Hindi we call it Visheshan. You might have heard this. So an adjective is a describing word. What does this describe? It describes a noun. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, कोई क्वालिटी बताता है उसके बारे में, वी कॉल इट एडजेक्टिव. लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है या नाउन भी आ सकता है, कोई कोई भी चीज आ सकती है. ये उस नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, कुछ वैल्यू ऐड करता है, कुछ डिस्क्राइब करेगा उसके बारे में. इट डिस्क्राइब्स इट और टेल्स अस अबाउट नाउन. वो चीज कैसी है, ठीक है. हाउ का आंसर हमें मिलेगा, ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें मिलता है एक एडजेक्टिव से. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस कार. हियर आई इज सब्जेक्ट, लाइक इज द वर्ब, दिस which part of speech? Now this is followed by a noun. Here this is followed by a noun. So this over here is an adjective. This is an adjective. Remember one thing, it will be followed by the noun they describe. Okay, the quality of adjective is these are followed by the nouns that they describe. So here car is coming after this, so this is adjective. Now this is which kind of adjective? It is pointing out towards that car. So this adjective is demonstrative adjective. We will study the different kinds of adjective further, but before that, understand what is adjective basically. Second question, I've written one more sentence over here. She is a brave fighter. She is the subject and the pronoun over here. We are talking about this girl. What kind of a girl is she? Is helping verb. This is an article, okay, which singularizes anything. She is a brave fighter. What kind of fighter? Brave fighter. So brave is what over here? It is describing word. What is it describing? It is describing what kind of a fighter is she. Okay. So fighter is what? Fighter is actually a noun. Fighter is actually a noun. And adjective is brave over here. Okay. So this adjective is followed by a noun. So I hope you have understood one point very clearly, that adjectives are followed by noun that they describe. Adjectives may describe a noun or a pronoun. Now understand the difference between a noun, adjective and adverb. How will we identify the words? Just merely by looking at the word, we can identify it as which part of speech. For example, I will tell you, here brave is written. Suppose I write a sentence, she fights bravely. If I write she fights bravely, now understand the difference. She fights bravely, she is a brave fighter. Fighter is a noun, it is preceded by an adjective. Means adjective के बाद में एक noun आएगा. ऊपर क्या है? ऊपर हम she के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा subject है. Then fights, it is a verb. And bravely, bravely is what over here? Bravely is not a describing word, it is an adverb, as we studied in the last lecture. So bravely is an adverb over here. You only see, is any noun coming after this? No. But here after brave, a noun is coming. So this is an adjective, this is an adverb. Okay. Now, some more words. Sometimes students get confused between noun and an adjective. Now, how will you identify the difference? For example, if I say,
If I write one more sentence over here, for example, she is known for her bravery. I have written a word bravery over here. She is known for her bravery. Here it was bravely, L-Y. It was an adverb. Here she is a brave fighter. Brave. It is a describing word followed by a noun, so it was adjective over here. But here no noun is coming after the word bravery. So it is understood it is not an adjective. Similarly, now have a look. She is known for her bravery. Bravery is what? It is actually a quality. Yes, definitely. It is a quality for which she is known for. But here, this quality is not an adjective. Here it is used as a noun. Which noun? Abstract noun. So here, bravery is a noun. So I hope the difference is clear. Bravery, bravely, and brave. Some more examples I will give you. If I say, okay, huge. Let's say huge. What is huge? I will write one more word, hugely. Okay, and one more word I will write. Okay, wait. I will write it here. Three words I'm writing: huge, hugely, and hugeness. Identify the different parts of speech. Huge is what? Okay, huge is a quality. You can say it is a describing word, so it is an adjective. Adjective. Hugely. बहुत ही बड़ी तरीके से. ठीक है? Ly is coming, so we have a hint over here. So this is an adverb. Hugeness. I told you when we add any suffix to an adjective, it becomes a noun. Okay? So here, hugeness is a quality and it is a noun, it is not an adjective. I told you huge is an adjective. Yes, but when we add any suffix means जो बाद में लगता है. ठीक है, तो हमने NESS ऐड कर दिया एक adjective में, जिससे हमें एक noun मिल गया, hugeness. Similarly, generous, generously, generosity. ठीक है, generous means kind. Similarly, one more example, kind, kindly, kindness. Okay, kind is adjective, kindly adverb, kindness quality, noun. Which noun? Abstract noun. So I hope the difference is clear to all of you. Now let's start with the kinds of adjective. Now we will discuss the kinds of adjective. The first kind is descriptive adjective. Descriptive, as the name suggests, it describes a noun or a pronoun. How will it describe a noun or a pronoun? It will either tell us the kind of a noun or a pronoun or the quality of that person, of that noun. या तो हमें कोई क्वालिटी पता चलेगी उस नाउन की कि कैसा है वो. ठीक है, सो हाउ का आंसर हमें मिलेगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से. इट विल आंसर टू द क्वेश्चन हाउ. ओके, एग्जाम्पल, शी इज अ प्रिटी गर्ल. तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी? व्हाट काइंड ऑफ का आंसर मिल रहा है. ठीक है, हाउ इज शी? प्रिटी. So here pretty is adjective. It is describing a noun over here. Which noun? Girl. Remember one thing, adjectives will always be followed by a noun. Okay, pretty के बाद में girl आ रहा है, it is a noun. तो यहाँ पर pretty एक describing word हो गया, ये हमारा हो गया descriptive adjective. Next question. This is a sweet fruit. Okay, कैसा fruit है वो? Sweet है. ठीक है. So again, the sweet is a quality being described about what? About fruit. So kind or quality, it tells us the kind. Descriptive adjective tells us the kind or quality of a noun or pronoun. So here we are getting the answer of the quality of the noun. Which noun? Fruit. कैसा fruit है? Sweet fruit है. तो sweet क्या हो गया? Descriptive adjective हो गया.
हियर शी इज अ प्रिटी गर्ल, कैसी गर्ल है, प्रिटी है। प्रिटी क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, वो डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन को, कौन से नाउन को, गर्ल को। यहाँ पर स्वीट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रूट को। तो ये नाउन्स थे जिनका डिस्क्रिप्शन हमें मिला एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव व्हिच इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वी ऑलरेडी स्टडीड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, yes, but that time when I taught you demonstrative pronoun, I also told you demonstrative adjective and I told you the difference between the two. So here again I'm repeating that thing which I have already told you. Demonstrative adjective we are studying, it is also used to point out noun or a pronoun. Okay, ये भी point out करने के काम में आएगा, but it will, the very important point I'm telling you, it will always be followed by noun. Okay, always followed by noun. It points out. Demonstrative adjective के बाद में हमेशा noun आएगा जिसको वो point out कर रहा है, बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के केस में नाउन उसके जस्ट बाद में नहीं आता था, ये डिफरेंस था। सो डोंट गेट कंफ्यूज, लुक एट द एग्जांपल, दिस पेन इज ब्लू, दिस पेन इज ब्लू। दिस क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इट इज पॉइंटिंग आउट एट समथिंग। ठीक है, अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पेन को। ठीक है, आई सेड दिस पेन इज ब्लू, फाइन। तो अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो पॉइंट आउट कर रही हूँ दिस व्हाट, पेन। तो यहां पर यू कैन सी दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड पेन इज अ नाउन। ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन दैट इट इज पॉइंटिंग आउट। फाइन, ओके, व्हाट एल्स कैन बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? क्या सिर्फ दिस होता है? नो, देयर आर सेवरल अदर वर्ड्स दैट कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। For example, if I say, I'm writing it here, this, that, these, and those. Okay, these are the demonstrative adjectives. This तो point out करता है singular को, okay, singular object, ठीक है, near. That point out करता है singular object that is far. Okay, these point out करता है plural objects that are near, and those point out plural objects, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे जो कि दूर है, फार है। ठीक है, फार। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अ फ्यू मोर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, सच मूवीज आर गुड for awareness. Here I've used one word such. Such के बाद में movies, जो कि एक noun है। movies क्या है, एक noun है, और यहाँ पर जो such है, it is used to point out the movies. कैसी movies? such movies. So यहाँ पर such क्या हुआ? such is a demonstrative adjective over here. Demonstrative adjective. ठीक है, तो क्या सिर्फ दिस होता है? नहीं, सच भी हो सकता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो पॉइंट आउट कर रहा है। सिमिलरली दिस, दिस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पास है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बोलूं जो कि दूर है, अब ये वाला पेन जो है, जो मेरे राइट हैंड में है, ठीक है, दिस पेन इज फार अवे फ्रॉम मी। ओके, सो आई विल से दिस पेन, जो पास है उसके लिए दिस, और जो दूर है उसके लिए दैट पेन। ठीक है, चलो, I kept this pen over here. I kept this pen over here. So this pen, this is near to me, and that pen, that is far from me. Singular था इसलिए this that use करा। अच्छा, अगर मैं plural, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करूँ, so now you can see over here, I have kept some more pens. ठीक है? Now these pens,
जो प्लूरल थे 2 हैं, वो भी 2 से ज़्यादा हैं, तो अब प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी these pens, और जो दूर है मुझसे उनके लिए मैं बोलूँगी those pens. Fine. I hope the difference is clear. So the next category of adjective is, अच्छा एक चीज याद रखनी है, demonstrative में point out करने के लिए यूज होते हैं और always they will be followed by a noun. इनके आगे हमेशा noun लगेगा. I will give you an example over here. For example, these shops are mine. Are mine. तो यहाँ पर these जो है shops के लिए यूज हुआ है, तो again shops एक noun है, these एक demonstrative adjective हो गया. So I hope the difference is clear. यहाँ पर such movies are good for children, तो such demonstrative हो गया, movies noun था, it is followed by a noun, so here this is also an demonstrative adjective. Next category is interrogative adjective. Interrogative adjectives are used to ask questions. I have written over here, these are used to ask questions. Interrogative pronoun भी हमने पढ़ा था, ठीक है. अब interrogative pronoun हमने पढ़ा था कि they are also used to ask questions, लेकिन difference क्या था? What was the difference between interrogative pronoun and interrogative adjective? Interrogative pronouns are not followed by a noun. Okay, suppose I say which is the place. Suppose I say which is your favorite place. Which is your favorite place. यहाँ पर जो which था, was it being followed by a noun? No, it was not a noun, it was a verb. So here it was interrogative pronoun. This was interrogative pronoun. This wasn't an interrogative adjective. But if I say which place is your favorite, I've modified the same sentence differently. Which place is your favorite? Here which, again I've used an interrogative word, but it is followed by a noun. Okay, so which is followed by a noun, so which is what over here? Which is interrogative. This is interrogative adjective. तो यहाँ पर which क्या हो गया? एक interrogative adjective हो गया. So I hope the difference is clear to all of you. This difference is very important to understand. Let's have a look at some more examples. I have written one word followed by a noun over here. ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के आगे हमेशा नाउन आएगा, ये याद रखना है. यहाँ पर नाउन आया था विच के बाद, इसलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ था. यहाँ पर नाउन नहीं आया था, एक वर्ब आई थी, इसलिए एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ था. एग्जाम्पल और देखते हैं. हुज बैग इज दिस? हुज, इट इज अ क्वेश्चन वर्ड, इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय अ नाउन. सो बैग क्या है? एक नाउन है. सो अगेन इट इज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. यहाँ पर हुज एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. विच कार इज योर्स? विच क्वेश्चन पूछ रहा है, इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, सो इट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट कलर इज दिस फ्लावर? ठीक है, व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. क्यों है? बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अ नाउन. व्हाट इज नाउन ओवर हियर? कलर. I hope it is understood to all of you. Now the next type of adjective is possessive adjective. What is possessive adjective, students? It shows possession. What is possession? It means ownership, मालिकाना हक. So जो भी ऐसा word है which is followed by a noun and tells us about possession or ownership will be considered possessive adjective. I already taught you possessive pronouns. There I made a table and gave you the difference between possessive adjective and possessive pronoun. Let's have some examples over here. His house is big. Here I have used his. His क्या बता रहा है? Possession बता रहा है. किसका house बड़ा है? उसका house बड़ा है. तो यहाँ पर his जो है it is possessive adjective. Ownership बता रहा है. And it is also followed by a noun. मैंने यहाँ पर क्या लिखा? These adjectives are followed by a noun. तो house एक noun है,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा possessive adjective. My parents are here. किसके parents? My parents. Possession बता रहा है, ownership बता रहा है, मेरे parents. So my is followed by noun parents. So my is again possessive adjective. Now what was possessive pronoun? Let me make it clear again. I taught you, when I taught you pronoun, I told you the difference between possessive adjective and possessive pronoun. If I say, for example, he is my brother. Okay, now here brother is a noun. So my is what? This is possessive adjective. Yes, because it is followed by a noun. If I say this car is mine, here mine is used. Is it followed by any noun? No. There is no noun over here. So mine is what? Mine is possessive pronoun. It is not an adjective over here because इसके आगे कोई noun नहीं आ रहा है. ठीक है, तो this तो हो गया यहाँ पर demonstrative adjective क्योंकि इसके आगे एक noun आ रहा है, लेकिन mine यहाँ पर possessive pronoun है. But if I say this is my car, अब यहाँ पर this car is mine था और यहाँ पर this is my car, तो यहाँ पर this तो हो गया demonstrative pronoun क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं आ रहा इसलिए प्रोनाउन हुआ. वहां पर दिस के आगे कार आ रहा था इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था. तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर है. और यहाँ पर माई इज व्हाट? माई इज possessive adjective. This is possessive adjective because it is followed by a noun. I hope the difference is clear now. Next is emphasizing adjective. Emphasizes means to lay stress on something. To lay stress means किसी बात की importance show करना, किसी बात पर जोर डालना. Lay stress on the preceding noun. Emphasizing adjective का रोल क्या होता है? It lays stress. ये जोर डालता है किस पे? On the preceding noun. Preceding noun मतलब इसके पहले जो noun आ रहा है ये उस पे जोर डालेगा, उसकी importance बताएगा. ठीक है, उस पर स्ट्रेस डालेगा. इट एम्फेसाइजेस सम आइडिया, किसी आइडिया पर जोर डालता है ये. कौन? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, आई सॉ द एक्सीडेंट फ्रॉम माई ओन आईज. अब यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो जोर डाल रहा है किसी बात पर? मैंने एक्सीडेंट को अपनी खुद की आंखों से देखा. मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ आई सॉ द एक्सीडेंट. ठीक है, बट I have written from my own eyes. यहाँ मैंने और ऐड कर दिया from my own eyes. मैं चाहती तो बोल सकती थी I could have said I saw the accident. But to emphasize the point that I saw it from my own eyes, मैंने खुद की आंखों से देखा एक्सीडेंट, इस बात पर मैं जोर डालना चाह रही हूँ. So to tell this I used emphasizing adjective. Which word is emphasizing adjective? Own. ओन मीन्स मैंने खुद की आंखों से देखा, किसी और की से नहीं देखा. तो यहाँ पर ओन को यूज करते हुए मैंने बताया दैट एक्सीडेंट मैंने खुद ने देखा. सो ओन इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. व्हाट एल्स कैन बी एन एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव? अंडरस्टैंड, देयर आर टू एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. वन इज ओन एंड द अदर वन इज वेरी. फर्स्ट वन इज ओन, सेकंड वन इज वेरी. दीज आर व्हाट? दीज आर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स. These are emphasizing adjectives. Own I gave you example very. Okay. Suppose he saw the okay. This is the very book. This is the very book I was searching for. I was searching for. अब यहाँ पर मैंने very यूज करा है. Very, this must be looking very unusual to you. आपको अजीब सा लग रहा होगा ये सुनने में, but
Here very is used in a different sense. It is used as an emphasizing adjective. ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज द वेरी बुक आई वॉज सर्चिंग फॉर, यही वो बुक है जिसे मैं ढूंढ रहा था. अब यहाँ पर मैं बोल सकती थी आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस बुक, ऐसे भी मैं बोल सकती थी. ठीक है, मैं इस बुक को ढूंढ रही थी. आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस बुक सिंस लॉन्ग, बहुत टाइम से मैं इस बुक को सर्च कर रही थी, ऐसे भी मैं बोल सकती थी. लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बोला. आई यूज्ड emphasizing adjective very, okay, टू ले स्ट्रेस ऑन माई पॉइंट. अपनी बात को जोर डालने के लिए मैंने वेरी का यूज किया. ठीक है, मैंने कहा यही वो बुक है जिसे मैं ढूंढ रही थी. ठीक है, तो यहाँ पर वेरी हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. वन मोर थिंग, दीज आर ऑल्सो फॉलोड बाय नाउन्स. तो ये तो हो गया नाउन. ठीक है, और वेरी के आगे नाउन आ रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? दिस इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. Very is what? Very is emphasizing adjective. So remember one point, these are also followed by nouns. So you can see one thing, that all the adjectives, see, this is also followed by a noun, this is also followed by a noun. देखो इसके आगे भी noun आ रहा है, this, ये भी noun आ रहा है, ये भी noun आ रहा है, ये भी नाउन लगता है इनके आगे भी. These are also followed by noun. Then possessive adjectives are also followed by noun, and emphasizing adjectives are also followed by a noun. So this thing is common in all the categories of adjectives. There are some more categories of adjectives. और भी 2-3 बच रहे हैं अभी kinds of adjectives. We will study it further, but I hope this is clear to all of you. So the points that I have written with green ink, okay, they are the key points that you have to remember. यहाँ पर descriptive kind quality बताएगा, demonstrative point out करने के लिए use होता है, interrogative questions पूछने के लिए use होता है, then possessive possession बताएगा, और ownership you can say, and emphasizing lays stress on the preceding noun. So these were the different types. We'll study it further. Some more types are there. So the next type of adjective is adjective of number. As the name suggests, adjective of number, it will talk about some number, some specific number, or some general idea you can say. Now, if we are talking about a number, it will definitely give us the answer of how many. नंबर की बात हो रही है तो यही हमें आंसर मिलेगा कितने. ठीक है, हाउ मेनी का आंसर मिलेगा, और इन व्हाट ऑर्डर. ठीक है, it also gives us answer to the question in what order. For example, we'll study it further. First, let's see, adjective of number is further subdivided into 2 categories. First one is definite, second one is indefinite. First category of adjective of number is definite adjective of number, and the second category of adjective of number is indefinite adjective of number. Now definite adjective of number क्या होगा? जिसमें हमें कोई exact number पता चलेगा, या फिर कोई एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी, या कोई एग्जैक्ट ऑर्डर की बात होगी. लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट ऑर्डर पोजीशन की बात नहीं हो रही, अननोन है, तो फिर हम उसे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मानेंगे. अगर हम एक जनरल आइडिया की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो डेफिनेट की बात करें तो कोई जनरल हमें नंबर मिलेगा. अब definite adjective of number is further divided into 2 categories. First one is cardinal and second one is ordinal. सबसे पहले तो adjective of number की 2 categories थी. पहला था definite, दूसरा था indefinite. Definite adjective of number की further 2 subcategories हैं. First one is cardinal, second one is ordinal. What is cardinal? Cardinal is exact number of nouns. ठीक है? Cardinal tells us the exact number of nouns. For example, 1, 2, 7, 100 etc. कोई भी एग्जैक्ट नंबर होगा तो वो कार्डिनल होगा. ठीक है, एंड व्हाट इज कार्डिनल? डेफिनेट. फॉर एग्जांपल, इफ आई से देयर आर 67 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 67 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल रहा है 67. सो दिस इज व्हाट? दिस इज कार्डिनल, definite adjective of number. Similarly, there is another category of definite adjective of number, which is ordinal. Ordinal tells us the order of a noun. Order बताएगा ये हमें किस स्थान पर वो noun है. ठीक है, और ये क्या बताता है cardinal? कितने noun है. ठीक है, यहाँ पर वो order बता रहा है. You can say the position also.
पोजीशन बता रहा है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, लास्ट. ओके, सी एग्जांपल, माय फ्रेंड इज सिटिंग on the first bench. So what is first over here? It is telling us the order. कौन से ऑर्डर पे बैठा है वो, ठीक है, फर्स्ट बेंच पे बैठा है. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द सेकेंड पोजिशन, ठीक है, इन द लाइन in the school assembly. During the school assembly I was standing on the second number. For example, position बताई, ऑर्डर बताया, किस ऑर्डर में खड़ा हुआ था मैं, सेकेंड ऑर्डर में खड़ा हुआ था, ठीक है. देन he stood at last position. लास्ट क्या बता रहा है, एक ऑर्डर बता रहा है, क्या पोजीशन रही उसकी, लास्ट पोजीशन रही, ठीक है. माय फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच और ही सिटिंग इन द लास्ट रो. तो लास्ट क्या है, एक ऑर्डर बता रहा है. तो ऑर्डर्स जो होते हैं वो ऑर्डिनल में आता है. रिमेंबर, ओ, ऑर्डिनल का ओ आप याद रख सकते हैं. ऑर्डिनल में ओ आता है तो ये क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर का ओ. कार्डिनल एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है. सो दिस वाज द डेफिनेट these were the सब categories of definite adjectives of number. अब adjective of number की दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, indefinite. यहाँ हमारे पास एक फिक्स नंबर था या एक फिक्स पोजीशन थी, फिक्स ऑर्डर था. यहाँ indefinite में कुछ भी फिक्स नहीं है, everything is non specific, everything is indefinite. तो it doesn't give exact numerical amount. ये हमें कभी भी एक exact numerical amount नहीं देगा, कितने का आंसर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, exact. But it just gives a general idea of the amount. Indefinite हमें सिर्फ एक general idea बताता है, ठीक है. I will highlight the word general over here. ठीक है, एक जनरल अमाउंट का, जनरल आइडिया लगता है हमें अमाउंट का कि कितना था, किस. फॉर एग्जाम्पल, see here, some, all, many, few, several. Are we getting the answer of exact number over here? If I say there are several mistakes in your answer, there are several mistakes, तो यहाँ several क्या हमें कोई specific number बता रहा है कितनी mistakes थी कॉपी में? No, it is just telling us general idea, बहुत सारी mistakes थी. So several is indefinite number of indefinite adjective of number. Then all the students are paying attention. How many students are paying attention? Are we getting an exact number that 67 students are paying attention, 100 students are paying attention? No, we are just getting an idea, ठीक है, general idea that all the students are paying attention. So this is indefinite adjective of number. So I hope the classification is understood. Adjective of number is divided into two categories, definite and indefinite. Indefinite is the general idea of the amount, but definite tells us the exact number or exact order of a noun. Now when definite adjective of number tells us exact number of noun, it will be known as cardinal. But when it tells us the order of noun, then it will be known as ordinal. So I hope this is clear to you. Now we'll study the further type of adjective. So the next type of adjective is adjective of quantity. As the name suggests, quantity means it will give us the answer to the question how much. I have not written how many. How many अगर मैं लिखती तो हमें पता चलता adjective of number. Adjective of number बताता है how many और adjective of quantity tells us how much. How much is intended. Intended का मतलब हमें कितनी मात्रा में किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज हमें चाहिए. That we'll come to know from adjective of quantity. For example, she ate some rice. उसने कुछ राइस खाई, उसने थोड़ी राइस खाई, ठीक है. She ate some rice. Remember one thing, adjectives of quantity, they are used with uncountable nouns. यहाँ देखिए, some क्या है, adjective of quantity. It is giving us the answer to how much. कितनी राइस खाई, थोड़ी राइस खाई, some rice. And it is used with uncountable noun rice. Rice is uncountable? Yes. It also includes determiner. ये एक अलग पॉइंट है, इसको हम बाद में लेंगे. पहले तो ये first two points we have to understand. Some is followed by uncountable noun. That is why it is adjective of quantity. Now you must be having a question in your mind that, ma'am, what is the difference between adjective of number and adjective of quantity? What is the difference between adjective of number and adjective of quantity?
indefinite adjective of number. In that also we use some, any, few. And then here also in adjective of quantity we are using some, few, some. Okay, I'll tell you the difference. See, I've written one sentence, some students are absent. Here students is which noun? Countable or uncountable? Countable noun. Yes. So some over here is indefinite adjective of number. If it is followed by a countable noun, then it is adjective of number. But if it is followed by uncountable noun, then it is adjective of quantity. This is the difference. I hope the difference is clear to you all. Okay, now you must be thinking that, ma'am, rice, is it countable or uncountable? You must be having this question. Now those who don't know the answer, for them I'm telling, rice is uncountable noun, but if you want to make it countable, you will say 2 grains of rice, 2 plates of rice. Yes, चावल का दाना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Grain of rice. ठीक है, या फिर हम उसको काउंटेबल बनाने के लिए बोल सकते हैं he ate 2 plates of rice, 2 bowls of rice. ठीक है, 2 bowl राइस खाए उसने. In that case we can call he ate some bowls of rice, means bowls of rice को हम काउंट कर सकते हैं, तो some उस केस में adjective of number हो जाएगा. He ate 5 bowls of rice, adjective of number. He ate some bowls of rice, adjective of number, because bowls of rice is countable. But if we say only rice, ठीक है, he drank some water, water is uncountable. Some water, तो adjective of quantity हो जाएगा some. But if I say he drank 2 glasses of water, then it can be counted and it will be adjective of number. So I hope the difference is clear. So now the next type of adjective is distributive adjective. Distributive, as the name suggests, distribution it will highlight. How will it highlight the distribution? See, it refers to individual nouns. किसी individual noun की बात करेगा. I am highlighting this word individual. Okay. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी इंडिविजुअल नाउन की बात कर रहा है विद इन द होल अमाउंट, मीन्स उस पूरे अमाउंट में से इंडिविजुअल को क्लासिफाई करेंगे हम. इंडिविजुअल की बात हो रही है. इट डिनोट्स, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से, इट डिनोट्स पर्सन्स और थिंग्स नेम्ड इन सेंटेंस टेकन सिंगली, सेपरेटली और सेपरेट लॉट्स. इसका ये मतलब है पूरा जो अमाउंट है किसी भी चीज का या कितने भी लोगों का, जो पूरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को हम रेफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड्स लाइक ईच, एवरी. many times I say I hope each student has done the work. We use such sentences. Each student will get the paper. Sometimes we say every citizen of India must pay taxes. So when I say every citizen of India must vote, okay, every citizen I am saying. ठीक है, एवरी का मतलब यहाँ पर है बहुत सारे सिटीजन्स हैं. ऐसा तो नहीं है कि ओके, सिटीजन्स कितने होते हैं? क्या एक ही सिटीजन होता है या बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं? क्या सिटीजन्स के ग्रुप्स हो सकते हैं? वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. वी कैन बी टेकन इंडिविजुअली, or we can be taken in a group, or we can be taken separately also. Now पूरे ग्रुप में से सिटीजन्स के अगर इंडिविजुअल सिटीजन की बात हो तो हम बोलते हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट वोट. ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ईच सिटीजन भी तो बोल सकते हैं हम. There is a difference between each and every. What is that difference? Understand, we use each for individuals of small group. अगर कोई छोटे ग्रुप की बात हो रही है तो उसके हर एक सदस्य को, उसके हर एक मेंबर को हम ईच यूज करके डिनोट करेंगे. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग ग्रुप, अ लार्ज ग्रुप, ओके, लार्ज ग्रुप, देन वी विल यूज एवरी. दिस इज द डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट वोट. अब सिटीजन्स तो बहुत बड़ा ग्रुप है, कितने सारे सिटीजन्स हैं इंडिया में. वी कैन नॉट से ईच ओवर हियर क्योंकि सिटीजन का ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए हमने एवरी लिखा यहाँ पर, ईच नहीं लिखा. एवरी सिटीजन. बट इफ आई से ईच मैन हैड 3 sons in the village. एक गांव था जहां पर हर आदमी के 3 बेटे थे.
अब वो एक छोटा सा ग्रुप है, विलेज में very limited number of people are there, so each I have used. I haven't used every over here. I have used each man had 3 sons in the village, each. Okay, in general, we in spoken English we don't think much, we say each or every as we feel like, but grammatically there is a difference between the two. So each for small group and every for large group. One more example I will give you. A farmer had 3 sons. एक किसान के 3 बेटे थे. Each son helped him in the work. Each son. I haven't said every son. Because 3 बेटों की बात हो रही है, एक छोटा सा ग्रुप है, so each son मतलब हर एक बेटे ने उसकी हेल्प करी. So each will come. Similarly, just as each and every are distributive adjectives, पूरे ग्रुप में से इंडिविजुअल को डिनोट करते हैं, चाहे सिंगली डिनोट करें चाहे सेपरेटली डिनोट करें, ठीक है, उनको एक मानते हुए या अलग मानते हुए या फिर उनको अलग अलग लॉट में क्लासिफाई करते हुए हम उनकी बात करें, सो वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सिमिलरली ईदर एंड नीदर, दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ईदर और नीदर, पहली चीज याद रखनी है, they both are used when two persons or things are given. जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें दी हुई जब भी दो चीजें दी हुई हैं तभी हम ईदर और नीदर को यूज करेंगे. एक चीज दी होगी तो नहीं यूज करेंगे. दो चीजों का होना कंपलसरी है, चॉइस होना कंपलसरी है, तभी हम ईदर और नीदर को यूज कर सकते हैं. अब ईदर क्या होता है? ईदर मीन्स या तो ये या वो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग वन ब्लू पेन एंड आई एम हैविंग वन ग्रीन पेन इन माई हैंड. ठीक है, this one is green, this one is blue. So if I say either pen will do means या तो green pen से काम चल जाएगा या फिर blue pen से काम चल जाएगा, but there should be two options. If there are not two options, then we cannot use either or neither. ठीक है, either means या तो ये या ये. ठीक है, either pen will do. If I say neither means ना तो green pen और ना ही blue pen, दोनों ही नहीं. Neither means ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों ही नहीं. So again we need two options to use neither. For example, neither white shirt nor black shirt is ironed properly. Ironed मतलब प्रेस होना. तो ना तो व्हाइट शर्ट पे अच्छे से प्रेस हो रही है, ना ही ब्लैक शर्ट पे अच्छे से प्रेस हो रही है. तो दोनों पे ही नहीं हो रही, तो हमने नीदर यूज करा, ईदर नहीं यूज करा. ईदर का मतलब पॉजिटिव हो जाता, नीदर का मतलब नेगेटिव. ठीक है, अगर मैं बोलती इधर व्हाइट शर्ट और ब्लैक शर्ट, इधर के साथ में हम और को यूज करते हैं और नीदर के साथ में हम नॉर को यूज करते हैं, ये पेयर में यूज होते हैं. ठीक है, सो अब यहां पर आप कहेंगे मैम यहां पर तो आपने लिखा ही नहीं, और यहां पर अंडरस्टूड है ईदर पेन विल डू मीन्स दोनों में से कोई भी चलेगा, या तो ये या ये. सो दीज वर द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. Now suppose whenever we are describing any noun, suppose we tell more than 2 or 3 qualities of that noun. Okay, suppose I say a long big green car. I'm talking about the qualities of a car. If I say long big green car, is this order correct, or should I say green big long car, or should I say antique green big car? How should I say? What should be the right order? So to understand this, let's understand what is the order of adjective, what should come first. So the first thing that comes in the sentence is determiner. What are determiners? A, an, are, those, several, some, her, for. These are the determiners. So this will come first in the sentence. These will be followed by the observation. What is observation? It means opinion. आपने कोई चीज देखी तो सबसे पहले आप उस चीज को देखकर क्या फील करते हैं? You will observation includes opinions like lovely, beautiful, unusual, expensive, ugly. देखो, for example, suppose you all are sitting in a class. Now a birthday boy comes, okay, wearing that nice dress. Okay, so what will you observe? Suppose that birthday boy comes and offers me some chocolates because it's his birthday. So he's wearing that colored dress. Yes.
Now, looking at that boy, first of all, you will notice that how is that boy looking? Is he looking smart or is he looking dirty? Okay, means you will notice, you will frame some opinion in your mind. A girl comes, okay, she gives me chocolates, ma'am, today is my birthday. Please have some chocolates. So I will take the chocolates and then I will give her the compliment. Oh, you are looking so beautiful today. Yes, your dress is so beautiful. So, this opinion that I formed looking at the girl or the boy, that comes in the observation, physical observation. कोई चीज को देखकर पहला थॉट क्या आता है आपके मन में? Yes, suppose any person comes to talk to you. Okay, first of all, you will have an opinion regarding how that person is looking. Yes or no? You will look at his appearance. You will say, this person is so nice. He's looking so handsome. Or she's looking so beautiful. Yes? So, such opinions, she's wearing a lovely dress. This is the first thought that strikes our mind looking at someone who is unknown. So, second thing that comes after determiner is observation, physical observation or the opinion. For example, lovely, beautiful, unusual, expensive, pretty, ugly, anything. Then it will be followed by physical description. Here the word is description and this was observation. ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, किसी को देखकर पहला थॉट क्या आया हमारे मन में, उसके बाद हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताएंगे उसका. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट थिंग दैट विल बी सेड इन द सेंटेंस विल बी साइज. ऐसा नहीं है मैं पहले शेप बता दूं, फिर कलर बता दूं, फिर साइज बताऊं, फिर एज बताऊं. नो, द करेक्ट ऑर्डर इज इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वी हैव टू टेल द साइज, देन शेप, देन एज एंड देन कलर. ये चार चीजें होती है फिजिकल डिस्क्रिप्शन में. फर्स्ट इज साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर. साइज में क्या आ सकता है? बिग, लिटिल, इनॉर्मस. इनॉर्मस मीन्स बहुत सारा, स्मॉल, टॉल, ये साइज बताते हैं. उसके बाद शेप बताएंगे हम. साइज के बाद आएगा शेप, पहले नहीं. शेप में आ सकता है राउंड, स्क्वायर, ओवल, स्टेम्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है. देन इट विल बी फॉलोड बाय एज. अब एज में क्या आएगा? Whether someone is young, old, youthful or antique. Okay, antique means purane zamane ka. So this tells us the age. Then these are the examples that I've written. All these are examples. And this is the order. This part. First determiner, then observation. This is first, this is second, then this is third. This is third. And in this, A size, B shape, C age, D color. This will be the order. Then color, red, pink and black. This will be followed by origin. This is the fourth part, origin. Now what is origin? Origin is the place to which something belongs. Okay. For example, I am an Indian. So I am of Indian origin. Italian, American, Thai, Dutch, Turkish. I like eating Thai food, for example. Now, Thai is telling us what? Thai is telling us the origin. That food is from which place? It is from Thailand. Then, after origin comes material. Now, what are the examples of material? Silver, gold, wood, wooden, you can say, plastic, silk, metal. Okay. After describing all these qualities, we will describe the material that is used in that noun. And after material, the next part is qualifier. This is the sixth part. I did not have space over here, so I continued it above. Origin के बाद material, material के बाद आएगा qualifier. Qualifier क्या होते हैं? These are the examples. Basketball, touring, hunting. इस तरह के words होते हैं qualifier. वो जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. सपोज आई से बास्केटबॉल प्लेयर्स. ठीक है, अब यहाँ पर प्लेयर्स को कौन क्वालिफाई कर रहा है? बास्केटबॉल क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, किसके प्लेयर्स? बास्केटबॉल के प्लेयर्स. सो बास्केटबॉल इज क्वालिफाइंग प्लेयर्स. और जो क्वालिफायर है वो किसको क्वालिफाई करता है? वो क्वालिफाई करता है नाउन को. सो आफ्टर क्वालिफायर नाउन विल कम. ठीक है,
So what are nouns? Like car, players, chain, dress, these are nouns. So I hope this order is clear. First determiner, then observation, then physical description. Under that size will come first, then shape, then age, then color. It will be followed by origin, then it will be followed by material. After material, qualifier will come. After qualifier, noun will come in the end. So this is the order of adjective that we have to follow. But generally, we don't think much when we speak any sentence casually. So we disturb the order, and that is the grammatical error. Okay, so remember this thing from now onwards. You know the right order. Now let's have a look at the example. Now, this is an example that I've written. One sentence is there written on the board. I love that old big green antique car. Now, several adjectives have been used: old, big, green, antique. These are what? These are adjectives. Now, how will you identify which sentence is correct over here? Second sentence, the order has changed. Big is coming first, then green, then old, then antique. Then in the third, antique, big, old, green. So, how will you identify? I told you the correct order of adjective: first determiner will come, thereafter observation, and then size, then shape, then age, and then color, and then origin, and then material, then qualifier, then noun. So in the end, noun is coming, we all know, fine. First thing, I love that, fine. We have to identify between these words. Okay, old, big, green, and antique, we have to rectify their order. So first thing should be size. What is size? Old? No, it is age. So age will come afterwards. Big, yes. Size, big represents size, so big should come first. So first sentence is incorrect because big is coming afterwards, so it is wrong. First sentence is wrong. Let's see second sentence. I love that big. Okay, size is coming first, fine. Next, shape should come, and then age, then color. But after big, we have written color, and then we have written the age. So age is coming after color. So again, second sentence is wrong. Third sentence, antique, big, old, green. Now antique, it is what? It is the age. Purani cheez hai, antique is age. So age is coming first and then size is coming. So again, third one is wrong. Fourth sentence, I love that green. Color is coming first, then age is coming, then okay. So again, it is wrong. So what is the correct one? I love that big. Okay, size is coming first, big. Then old, age is coming, fine. Then green, color is coming, fine. After age, color, and then antique, fine. We are talking about that, and then car. So last sentence is correct. So this was the order of adjective. Now the next topic is degrees of adjective. There are 3 degrees of adjective. First one is positive degree. It tells us the general condition of a person or thing, the general idea it talks about. For example, she is beautiful. I'm not making any comparison over here, nor uh, nor I'm observing more than one person over here. I'm just talking about one person and the quality of that person. So she is beautiful. I got a good feedback. What kind of feedback I got? It was good. Okay. So this was positive degree. These were, she's a beautiful, if I write, she's a beautiful girl. If I write over here, it is followed by a noun. She's a beautiful girl. I got a good feedback. So these are nouns and they are preceded by adjectives. Next comes the comparative degree. Now, what is comparative degree? Understand, as the name suggests, comparative means comparison is made. And when can we make a comparison? Can we compare only when there is one person or a thing? No. Definitely, if we are comparing, there it is a common sense that there are more than one person. So it compares the qualities of two persons or things. दो का होना जरूरी है, ठीक है. दो में comparison होता है तो comparative degree apply होती है. Okay, it is used to find out the better of the two. जब हम कंपेयर करते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को और उनमें से जो बेटर है उसको आइडेंटिफाई करना है, then we will apply comparative degree of adjective. For example, she is more beautiful than her friend. Now here there are two persons. First person is she
and second is her friend. We are comparing her to her friend, so we will use comparative degree. Who is more beautiful? She is more beautiful. So you can see here I use only she is beautiful. One person was there. Here two people are being compared, so more beautiful. I've added more over here. More. Fine. Similarly, next example, I got a better feedback than my friend. Here again, better. Better is what? It is comparative degree of adjective. Here it was I got a good feedback. कोई कंपैरिजन नहीं था तो गुड मैंने बोला. यहाँ पर आई गॉट अ बेटर फीडबैक देन माई फ्रेंड. एक तो मेरा फीडबैक और एक मेरे फ्रेंड का फीडबैक, दो जनों का फीडबैक कंपेयर हो रहा है, तो उसको बताने के लिए मैंने कंपेरेटिव डिग्री यूज करी बेटर. फाइन. लेट्स हैव अ लुक एट द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव मीन्स सुपर, हाईएस्ट. ठीक है. इट टेल्स अस द मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिटी. सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है वो हमें बताएगा सुपरलेटिव डिग्री. सो इट कंपेयर्स द क्वालिटीज ऑफ मोर देन टू पर्संस और थिंग्स. जब दो लोग से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो लोग से ज्यादा लोग हैं या दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर हो रहा है, वी मेक यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. ओके. नाउ one more point to remember is that this is very important point. Definite article the is what? It is definite article. It is used before superlative degree. For example, the tallest building. Okay, the biggest mistake. Okay, तो the लगाते हैं हम. ठीक है. The best idea. the लगाए superlative degree में. Now see, she is the most beautiful of all. ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है, और मैंने द लगाया है सुपरलेटिव डिग्री के पहले. यहाँ पर मैंने मोस्ट लिखा है, मोस्ट. मोस्ट. ठीक है. यहाँ क्या लिखा था? मैंने मोर लिखा था. ठीक है. और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था. यहाँ सिर्फ ब्यूटीफुल, यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल और यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है. तो ये क्या हो गए? ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री. ये पूरी हो गई सुपरलेटिव डिग्री. मोस्ट ब्यूटीफुल, ये था मोर ब्यूटीफुल, ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्री, एंड ओनली ब्यूटीफुल वाज पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पर गुड फीडबैक पॉजिटिव डिग्री, बेटर फीडबैक कंपैरेटिव डिग्री, एंड द बेस्ट फीडबैक, ये जो बेस्ट था ये हो गया था सुपरलेटिव. ठीक है. और देखो द आ रहा है इससे पहले. अब यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है, आई गॉट द बेस्ट फीडबैक अमंग ऑल द फ्रेंड्स. बहुत सारे लोगों की बात हो रही है. ठीक है. दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है. दो की बात होती तो आई वुड हैव यूज्ड बेटर. ठीक है. माय फ्रेंड एंड आई. लेकिन यहाँ पर ऑल द फ्रेंड्स है मींस दो से ज्यादा है, इसलिए बेस्ट लगाया. सो दिस वाज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स.